So, this is the fifth video on revision series on Indian polity, and the chapter is Union and its territories. I have made playlist for this revision series. उसकी लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा. I will pin the link of playlist in comment section for revision series on Indian polity. Let us discuss the outline of this video. Here we are dealing with Article 1, 2, 3 and 4 of the Indian Constitution, and also the reorganization of Indian states. We will also deal with various commissions with reference to reorganization of states. So before going ahead, let us discuss Article 1 to 4 of Indian Constitution. So part 1 of the Indian Constitution deals with Article 1 to 4, that is Union and its territory. Article 1 says that India, that is Bharat, shall be union of states. That means India is not federation of state. Unlike US federal system, which is coming together federation of states, Indian states are holding together states. यानी in America there is agreement between the center and the states. India में ऐसा कोई भी agreement नहीं है. हम आगे देखेंगे इसके बारे में. Also, it says that territory of India includes number 1, territory of states, number 2, union territories, and 3, territories that India may acquire in future. अब आपको ये याद रखना है, territory of India is wider expression than Union of India. वो कैसे? तो देखिए, number 1, Union of India includes only states. For example, Maharashtra, Gujarat, UP, MP, Karnataka, Tamil Nadu and so on. But territory of India includes above states as well as union territories. So that means territory of India is bigger and wider expression than union of states. ये था Article 1. Now let us move to the Article 2. Article 2 talks about the power to admit new states in India. New states can be of two types. Okay. Number 1, the power to admit new state that are already in existence. ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस जो स्टेट है उन्हें ऐड करने की प्रोविजन आर्टिकल 2 में दी है. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच सेटलमेंट, पोर्तुगीज सेटलमेंट, दैट वेर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स बट वेर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया एंड दे वेर इंक्लूडेड इन इंडिया विथ हेल्प ऑफ दिस प्रोविजन. सेकेंड नंबर ऑफ स्टेट्स आर पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स. दैट मीन्स गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट ऑल टुगेदर एंड एड इट इन टू इंडिया. So let us move to the Article 3. Article 3 talks about internal readjustment, and this power to deal with readjustment lies with the Parliament. So Parliament can increase or decrease area of any state or alter the boundary or name of any state single-handedly. Now months ago I had made some videos regarding Article 1 to 4. Now I have combined them and I want you to watch these videos. 2 मिनट में आपका Article 1 to 4 एकदम क्लियर हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन. आर्टिकल 1 में 3 क्लॉज है. फर्स्ट क्लॉज बताता है अपनी कंट्री का नाम एंड टाइप ऑफ पॉलिटी दैट वी प्रैक्टिस. इट सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट. Makers of the constitution use the term union of states instead of federation because Indian states do not enjoy right to secede. यानी कि कल उठ के कोई भी स्टेट ये नहीं कह सकता कि आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, बट सेंटर अपने हिसाब से स्टेट को मोल्ड कर सकती है. इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ अ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. क्लॉज 2 सेज इंडिया के स्टेट्स एंड टेरिटरीज विल बी मेंशन्ड इन शेड्यूल 1. करंटली इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 UTs and they are specified in schedule 1. Clause 3 is about territory of India. Territory of India is broader term than union of states. The term union of states includes only the states and it does not include UTs, whereas the territory of India include both the states and all the UTs. Article 2 is about the admission and establishment of new state. Article 2 empowers the parliament to admit into India those states that were not part of India. आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट लॉ बना के कोई भी स्टेट जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है उसे इंडिया में इंक्लूड कर सकता है. फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी, कारिकल, माहे एंड यनम, पोर्तुगीज सेटलमेंट ऑफ गोवा एंड दमन एंड सिक्किम, ये सारे स्टेट्स और यूटीज वेर एडमिटेड इन इंडिया विद द यूज ऑफ पावर वेस्टेड इन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 2. आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट द स्टेट्स दैट वेर और आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. And Article 3 talks about internal readjustment.
about which we will learn in next video. Article 2 is about the admission and establishment of new state. Article 2 empowers the parliament to admit into India those states that were not part of India. आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट लॉ बना के कोई भी स्टेट जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है उसे इंडिया में इंक्लूड कर सकता है. फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी, कारिकल, माहे एंड यनम, पोर्तुगीज सेटलमेंट ऑफ गोवा एंड दमन एंड सिक्किम, ये सारे स्टेट्स और यूटीज वेर एडमिटेड इन इंडिया विद द यूज ऑफ पावर वेस्टेड इन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 2. आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट द स्टेट्स दैट वेर और आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. And Article 3 talks about internal readjustment, about which we will learn in next video. ये है आंध्र प्रदेश जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस एज अ पार्ट ऑफ मद्रास एंड हैदराबाद, और ये है आंध्र प्रदेश आफ्टर फर्स्ट लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन दैट हैपेंड इन 1956. और आज आंध्र प्रदेश का मैप कुछ ऐसा दिखता है, और ये सब चेंजेस के पीछे जिम्मेदार है द पार्लियामेंट, द सेंट्रल लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया, एंड आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है. उस पावर का यूज करके पार्लियामेंट एग्जिस्टिंग स्टेट्स की इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर सकती है. इंटरनल रीएडजस्टमेंट इंक्लूड एग्जिस्टिंग स्टेट्स का एरिया घटाना या बढ़ाना, नाम चेंज करना, दो स्टेट्स को यूनाइट करके नया स्टेट बनाना, या फिर एक स्टेट के टुकड़े करके दो नए स्टेट्स बनाना. और ये सब करने के लिए पार्लियामेंट हैज टू पास द बिल जस्ट बाय सिंपल मेजोरिटी. सिंपल मेजोरिटी यानी जास्ती की मेजोरिटी विंस, यानी मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. अगर आज राज्यसभा में 240 मेंबर प्रेजेंट है और सिर्फ 200 मेंबर्स को वोट करने का मन किया है, देन बिल कैन बी पास्ड विद ओनली 101 आईज. आर्टिकल 4 एक हाईवे है. ये हाईवे पे सिर्फ पार्लियामेंट की गाड़ी चलती है. हमने अब तक सीखा कि आर्टिकल 2 एंड 3 प्रोवाइड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया एंड इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स. अब आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंडर जो चेंजेस लाने हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है. देखो, आर्टिकल 2 एंड 3 चेंज करता है शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 को. शेड्यूल 1 इज अबाउट नेम ऑफ स्टेट्स एंड 4 इज अबाउट अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने के लिए एक लेंथी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है. स्पेशल मेजोरिटी, रेटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट एंड ब्ला ब्ला, एंड दैट प्रोसीजर इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 368. बट आर्टिकल 4 एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है सो दैट यूनियन का इंडिया की टेरिटरी पे फुल ऑन कंट्रोल होना चाहिए. अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 की जरूरत ही नहीं. जस्ट ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन विद सिंपल मेजोरिटी इज सफिशिएंट टू मेक चेंजेस टू द स्टेट्स. तो हुआ ना आर्टिकल 4 हाईवे. यू कैन रिमेंबर इट एज NH4. I hope Article 1 to 4 is now clear to you. Now let us move ahead and learn about the 100th Constitutional Amendment Act. Then we will learn about the reorganization of states and various commission with reference to reorganization of states. So that we will do now. Now we learned that Parliament can increase or decrease area of any state or alter the boundary or name of any existing state single-handedly. But how? एंड ये पावर पार्लियामेंट को किसने दिया? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दिस इन नेक्स्ट सेक्शन. सी, सच अ बिल टू इंक्रीज और डिक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट और ऑल्टर द बाउंड्री और नेम ऑफ एनी स्टेट बिल शुड बी प्रेजेंटेड ओनली आफ्टर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. Actually, President acts on behalf of Council of Ministers, but we will learn this in Council of Ministers and President lesson. Right now, our focus should be on such bill needs prior recommendation of President. Then it should be sent to concerned state legislature. जिस स्टेट का नाम चेंज करना है, जिसका एरिया बढ़ाना है या फिर घटाना है, उस स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये बिल जाता है टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, एंड उनके व्यूज़ पार्लियामेंट पे बाइंडिंग नहीं होते. इट इज़ जस्ट अ फॉर्मल प्रोसेस, फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ थिंग होती है. तो इससे क्या समझ में आता है? व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? वी लर्न दैट इंडियन स्टेट्स आर वल्नरेबल. इंडियन स्टेट्स आर वल्नरेबल टू द विल ऑफ पार्लियामेंट. सो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया इज़ अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन. इंडिया का यूनियन कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता. इंडिया इज़ अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ अ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. स्टेट कभी भी डिस्ट्रक्ट हो सकता है. पार्लियामेंट अपने हिसाब से स्टेट को मोल्ड कर सकती है, और चेंजेस मेड इन आर्टिकल 2 एंड 3 आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि हम अपना एरिया किसी और कंट्री को दे नहीं रहे हैं. वी आर नॉट गिविंग एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी टू द अदर नेशन. And Article 3 allows this internal readjustment, and only Parliament with mere simple majority is enough to do this.
But if you want to cede Indian territory to a foreign state, then parliament and their simple majority is not enough. And in that case, we need amendment. And for that matter, we had 100th Constitutional Amendment Act of India for implementation of land boundary agreement between India and Bangladesh. It was a problem of enclaves. Indian territory में some enclaves were there, some in Bangladesh, some Indian enclaves were present. Enclaves यानी फॉरेन टेरिटरी में इंडिजिनियस टेरिटरी का पार्ट होना. सो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट वांटेड टू गिव अप सम इंडियन टेरिटरी टू बांग्लादेश and in return India will get some territory, and in that case amendment is necessary because we are ceding our territory to a foreign state. In case of border dispute, only executive action is enough. This issue popped up in Berubari Union case and इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था. नाउ आपको ये टेबल रिमेंबर करना है विच समराइजेस ऑल द अबव इन्फॉर्मेशन एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन. जो भी हमने ऊपर कहा उसको रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए यू कैन रिमेंबर दिस टेबल. नंबर 1, इफ देयर इज़ अ बॉर्डर डिस्प्यूट it can be resolved through executive action and this has been ruled by Supreme Court. Supreme Court ने ऐसा जजमेंट पास किया था. Now second, if there is internal readjustment, यानी कि स्टेट का नाम, स्टेट का एरिया घटाया या फिर बढ़ाया जा रहा है, नाम चेंज किया जा रहा है, then it can be done by parliament by ordinary law under article 3 and 4 and article 2, 3 and 4 and no constitutional amendment is needed. Okay. Number 3, if it is related to ceding Indian territory to a foreign territory as it was case in the 100th Constitutional Amendment Act, the land boundary agreement, then constitutional amendment is necessary because we are ceding Indian territory to a foreign state. Now with all that being said, let us understand the evolution of states and union territories and various commissions that came for reorganization after independence. Just after independence, India integrated in itself the princely state of Hyderabad through police action. Junagadh was included with referendum. Kashmir was included through instrument of accession. And fourfold classification of states was adopted like you are seeing on the screen. This fourfold of categorization gave 4 parts. Part A included larger governance provinces. Part B included larger princely states. Part C included smaller governor provinces and smaller princely states. And Part D included Andaman and Nicobar Islands. Then Dhar Commission came in 1948. It said that reorganization of states should be on the basis of administrative convenience rather than linguistic factors. Still, there was resentment mostly from southern states as they wanted reorganization on the basis of linguistic state, which led to another committee, JVP committee. J means Jawaharlal Nehru, V means Sardar Vallabhbhai Patel and P means Patabhi Sitaramaiah. And JVP committee submitted its report in 1949 and formally rejected language as the basis for reorganization of states. इसने रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. बट इसके खिलाफ पोटी श्रीरामुलु वेंट फॉर हंगर स्ट्राइक फॉर 56 days फॉर क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल एंड डाइड इन दिस प्रोसेस. In 1953, government was forced to create the first linguistic state of India, that is Andhra state. Here, Telugu speaking areas were separated from the state of Madras. Madras में से Telugu speaking areas were separated. After the creation of Andhra Pradesh, other states also started demanding linguistic states. Then another 3-member commission was set up under the chairmanship of Fazal Ali. Fazal Ali Commission. It broadly accepted the language as the basis for reorganization of states. First time, language as the basis for reorganization of states was formally accepted. But it rejected the theory of one language, one state. ये theory को उन्होंने बिल्कुल reject किया. Then what they said? They said that unity of India should be prime consideration while drawing boundaries. It said 4 factors are important. That is preservation and strengthening of unity and integrity of the country. Then linguistic and cultural homogeneity. Then financial, economic and administrative consideration.
Then finally, planning and promotion of the welfare of the people in each state will be given priority. So it said out these four factors would be important for reorganization of states. Also, the fourfold classification was abolished, which was there after independence, and 16 states and 3 centrally administered territories were created. Now, with all that being said, let us move to the states and union territories created after 1956. Henceforth, I will be faster because it is mere data and you need to revise this on your own. So first, Maharashtra and Gujarat. It was created in 1960 from the state of Bombay. Maharashtra and Gujarat became two separate states in 1960. Mumbai became the capital of Maharashtra and Ahmedabad became the capital of Gujarat. Second, Dadra and Nagar Haveli. Dadra and Nagar Haveli was a Portuguese enclave till 1954 and later it became a union territory of India in 1961. It is located between the states of Gujarat and Maharashtra that you know. Then third is Goa, Daman, Diu. India acquired these territories from the Portuguese by means of police action in 1961. In 1987, Goa was granted statehood and Daman and Diu became a separate union territory. They are located on the west coast of India that you know. Now let us move to the Puducherry. Puducherry was formerly known as Pondicherry and it was a French colony till 1954 and became a union territory in 1962. Next is Nagaland. In 1963, Nagaland became the 16th state of India. It is located in the northeastern part of country and is home to several indigenous tribes. Next is Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh. In 1966, the state of Punjab was divided into three parts, with Haryana becoming a separate state and Chandigarh becoming a union territory. In 1971, Himachal Pradesh became a separate state at the same time. Next, Manipur, Tripura and Meghalaya. In 1972, these three territories received a statehood. Next is Sikkim. In 1947, it was a princely state ruled by Chogyal. After independence, India became a protectorate state of Sikkim. In 1975, Sikkim became the 22nd state of India. That is the timeline for Sikkim. नाउ नेक्स्ट इज मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा. गोवा के बारे में मैंने अभी थोड़े देर पहले बताया, बट let us go according to timeline. Mizoram and Arunachal Pradesh and Goa granted statehood in 1987. The state of Goa was created by separating the territory of Goa from the union territory of Goa, Daman and Diu. Next is Chhattisgarh, Uttarakhand and Jharkhand. In 2000, these three states were created by separating the state of Madhya Pradesh से निकला छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से निकला उत्तराखंड एंड बिहार से निकला झारखंड. Next is Telangana. In 2014, Telangana was carved out of the state of Andhra Pradesh to become 29th state of India. And finally, Jammu and Kashmir and Ladakh. In 2019, the state of Jammu and Kashmir was bifurcated into two union territories, with Jammu and Kashmir becoming a union territory and Ladakh becoming a separate union territory. Finally, union territory of Diu, Daman, Dadra and Nagar Haveli was merged recently. So overall, India has 28 states and 8 union territories at this point of time when I am making this video. Also, this is a factual information, again a factual information, and with that our chapter will be end. There was also the change of name. Let us go one by one. United Provinces was renamed to Uttar Pradesh in 1950. In 1969, Madras was renamed to Tamil Nadu. In 1973, Mysuru was renamed Karnataka. In 1992, the UT of Delhi was renamed as National Capital Territory of Delhi. In 2006, Pondicherry was renamed as Puducherry, and in 2011, Orissa was renamed as Odisha. So this was the important factual information that you can remember for your prelims examination. So with that being said, our chapter of Union and its territory is complete. This is the revision series on Indian polity by M. Lakshmikant. I hope these videos are helping you in quick revision. If you have any doubts, please comment below in comment section. I will try to resolve your query regarding Indian polity. And that's it from my side. Thank you. Thanks for watching.
and check the link of the playlist given below in description and comment section. Thank you. Bye.